domain will also be all real numbers. Now the only thing is how to draw the graph. So this would be y is equals to x plus 10, which is obviously a straight line. So that is why the graph is also straight line. See? Yes, sir. So yeah, so whenever you try to sketch any graph, you just replace fx with y, and you will only be asked these linear graphs only. Otherwise, you won't be able to solve other graphs. So we Right can now. take any value, like here f of 0 is equal to 10. So similarly, we can take any value we like. Yeah, yeah. For example, f of 2 or f of 5, something like this. Yeah, f of 100, 110. But the only thing is that you will not be able to put that point on the graph. I mean, how would you, I mean, you will have difficulty to plot 100, 110. Yeah. Rather than plotting 0, 10, you will be facing more difficulties in the higher values. So you just take the values which can be easily plotted on graph and solve that. Yes, sir. So this was your first doubt, right? And sir, can you explain the second example 19? Just a minute. Yeah, example 20, 19. I send them again, the second image. Sorry? Yes. Let R be a relation from Q to Q defined by R, A, B. A, B both belongs to Q. What is Q, Safa? Do you know? Integers, right? No, not integers. Oh wait, not integers, sorry. No, sir, I don't really know what it's. Rational numbers. Oh, Q okay. is rational numbers. So he's basically telling us that A and B both are rational numbers such that A minus B is an integer. Okay. Now we have to show that first A, belongs to real number. Okay. A, B belongs to real number implies that B, A belongs to real number. Okay. So this question is basically from 12th class. I mean, this is the concept of 12th. Whatever you have been asked to do in the 3 questions, these are actually 3 types of relations, which we'll study in 12th. So he's trying to make you prove those relations. So if the first property is true, it is known as this relation can be called reflexive. So if A, that is, if you put input and if your input and output are the same, but still they belong to the relation. In that case, you can call that relation as reflexive relation. We will study about it in detail in 12th class. But for now, he wants us to prove that A, belongs to R, right? But first of all, let me define R. R is the set of these two values, I mean, the tuple of these two values, A, B, such that A and B both belongs to Q, and A minus B should belong to integer. If there are any two values whose difference is integers, they will come into this relation. Like 1, 2 belongs to this relation. Why? Because if you find out 1 minus 2, that is minus 1, which is an integer. 1 and 2 both belongs to rational numbers. So that is why 1, 2 belongs to this relation R. Did you understand this? How to observe, how to get information about this relation? Yes, sir. So you can take any values. Now it has already been given that the values are A, A. So you need to check first whether A, A belongs to Q or not. So it should be given that A and B both belongs to Q. It has already been given that A and B both belongs to Q. So obviously A belongs to Q. Then you have to find A minus A. What is A minus A? It will be like 0. Yeah, and does 0 belongs to Z. integer? I mean integers. Yes. Yes, that means that your A, A belongs to the relation. So, sir, if it belongs to integers, then the whole A, A will be belong to R. Yes, that pair will be the part of your relation. Any pair which has both the values as rational numbers and the difference of these rational numbers is an integer, then that pair belongs to your relation.
Okay, sir. Did you understand this? Yes, sir. Okay. Now in second part, we need to prove that if A comma B belongs to R. Let's first understand the situation. If A comma B belongs to R, it obviously implies that A and B both are rational numbers, and A minus B must belong to integer. Am I correct? Yes, sir. Now he wants us to prove that B comma A should also belongs to R. तो मैंने बोला कि भाई अगर B comma A R को belong करेगा तो इसका मतलब पहली बात तो A और B दोनों Q को belong करनी चाहिए, which is already been proven. Sir, this should be. I'm saying if B comma A belongs to R, then A comma B both should belong to Q first of all. Yeah. Which has already been proven. Yeah. Because A and B are both belongs to Q, then only this pair will be the part of relation, right? Yes, sir. So A comma B both belongs to Q, and if A minus B is an integer, Safa, then B minus A should also be an integer. Yeah. The negative Sir, of A minus B. It's going to be B minus. So if, okay, let's say A minus B is an integer. Let's say this value is 2. What will be the value of B minus A? -2. Minus 2. So if A minus B belongs to integer, it obviously tells you B minus will also be belong to integer. yes, correct. So we should have started it like this, that A comma B belongs to R, it implies that A comma B belongs to Q and A minus B belongs to integer. Now when A minus B is an integer, it surely means that B minus A is also an integer. Now, belong to R? yes. Okay, sir. So, sir, if we need to prove any time that an object that belongs to R, we have to find a subtraction of it. Like, can you say that? According to the relation condition, this relation wants this. Yeah. Maybe some other relation wants A into B as integer. Or maybe some other condition. But yeah, you have to follow that condition. You have to follow that condition. Whatever that relation is throwing on you, that condition should be satisfied. Then only you will be able to say that this pair belongs to the relation. Okay, sir. Similarly, the third part as well. If A comma B belongs to integers, sorry, if A comma B, so it has already been given that A comma B and B comma C both belongs to the relation. So what does that imply? First of all, let's talk about this. First of all, if A comma B belongs to R, what does that imply? A minus B belongs to C. I mean integers. Yes. And A comma B belongs to Q. Like yes, before. Correct. So there are two implications. A comma B belongs to Q and A minus B must be an integer. Let's say that integer is some value n. Okay. For the simplification part, just so that we can simplify it later on, that A minus B has some value. I don't know what will that value be, but that value is some n, and n is an integer, right? Yeah. Now, what does this imply? B, so it is B minus C is equal to some other integer, right? Sir, B comma C belongs to C or belongs to R? Q. Sorry, not Z. It should be R relation. So if B comma C belongs to R, then B comma C belongs to Q. I mean, yeah. So I have taken that integer as n. Correct? Yes, sir. Sir, we can see that B comma C belongs to Q. Yes. Even C? Yes. I have written B comma C belongs to Q. Now, so clearly from these two, I can say that A comma C must belong to Q. Am I correct? Because A is Q from the first part and C is Q from the second part. Right? Yes, sir. And also,
Now let's subtract these two parts. Sorry, let's add these two parts, a minus b and b minus c. Right. If you will add these two equations, let's say this equation is 1 and let's say this equation is 2. So adding 1 and 2, you will get in the left hand side, b gets cancelled out. Yeah. You will be left with a minus c. And in the right hand side, you will get n plus m. Now this n is also integer, m is also integer. So sum of two integers should be an integer, right? Yeah. So this should belong to z, which obviously means that a comma c also belongs to r. Okay. That is how we can prove this. Did you understand this, sir? Okay. Yeah. Cool. Now we need to solve these questions from sequence and series. Okay. Whenever you are done, just tell me. Example 20 as well. Can you just explain what it means? Just a second. Can I remove this? Yes. Sir. This be a linear function from z to z. Okay. What is a linear function? Just tell me this. Is equal to x plus c. Is that correct? Yes. Whenever you talk about, okay, so this mx plus c is a form of linear. I mean, you can certainly say that this is a linear function. There's no worry. But we generally use mx plus c when we talk about straight lines. Yeah. We take m as slope and c as your what intercept, right? But leaving that, abhi to hum straight lines pe nahi hai. So I can also write this as ax plus b. Nothing to worry about. I just need to take two unknowns, which can be m or c, a or b, p or q, whatever you want to take, and the highest power of x should be 1. That's when you can call a function as linear function, right? Yes. Sir. So there is a linear function. We don't know what is that. So we have assumed that this linear function fx is somewhat like mx plus c. Now we have been provided with some values. Values are 1, 1, 2, 3. एक second. 1, 1, 2, 3. वैसे तो दो ही बहुत हैं, but फिर भी 0, -1 and -1, -3. इसने में बताया है कि these are 4 pairs which belongs to your function, right? Yeah. It means that when you put x as 1, you will get y as 1. You will put x 2, you will get y as 3. Yes. So you have been given the input and output for 4 cases, right? You have been given input and outputs for 4 cases. Just a second. Now, can you solve this now? We have to find m, sir. M and c. So if you put x1, f1 will be 1. 1 is equals to m into 1 plus c. Am I correct? Did you understand this? Yes, sir. That's how you can solve. So you just need two functions. Put this. In that way, you will be easily getting the variable. Yeah, so m is equal to 2 and c is equal to -1. Yeah, correct. So, sir, for this question, we just need to find the value of m and c. Yes.
Then sir, find fx for this like y. Then put, yeah, you can put fx as y. Yes. But you need to tell this function. What is the linear function? So linear function would be 2x minus 1. This is your function. Okay, sir. Yeah. Now, if you put, also check, okay. If you put minus 1, what you are getting as fx. So f minus 1 is minus 3. Am I correct? Put Minus x as m. minus 1. It means that f minus 1 is equals to minus 3. That is, when you put x minus 1, you will get y as minus 3, Yeah. which satisfies with the given case. Also verify this on this pair, 2, 3. So if you put x2, you should get y as 3. Are you getting y 3? Yeah. Yeah, in that case, you have found out the correct function. Okay, sir. Yeah. So Yes. I have doubts in that exercise 9.3. Yes, please tell me the doubts. Uh, 9.3. Okay. Yeah. PP1. Sir, the first question, can you just show how to do at least one of them? Like, Fifth. read them, I'm getting it wrong. Which one? Fifth. Fifth question. Okay. You've mentioned us 1 minute. GP is like 2, 2, 2, 4, and it goes on. We have to find which term will be equal to 128. So should we solve this only? First The part? following, no, it's of the following sequences. Should we solve the first part only? Yeah, which term of the following sequences 2, 2 root 2, 4 is 128. Okay. So is this a GP? Have you checked? Sir, I'm getting it like root 2. Yeah. So it is a GP. First check. If you divide 2 root 2 by 2, you will get root 2. If you divide 4 by 2 root 2, you will again get root 2. So this is a GP. First of all, सबसे पहले कंफर्मेशन लेना है सफा. ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम किसी भी चीज को एज्यूम कर लेंगे. We don't assume anything in maths. We always try to find out. We always try to prove whatever we are going to do. Okay. So this is a GP. We know now with A2 and R root 2. 2. Now what do we need to find? N. Yeah. How to find N? Because we have been given AN as 128. Am I correct? Yeah. So what's the formula for AN, first of all? N is equal to A into R raised to N minus 1. Yes. Now, you know A, which is 2. You know R, which is root 2 to the power N minus 1. And it should be equal to 128. Am I correct? Yes, sir. Okay. So this is 2 to the power 1. And this can be written as 2 to the power N minus 1 by 2. You can solve root 2. Root 2 is 2 to the power half. Then half will get multiplied with N minus 1. So it will become 2 to the whole power N minus 1 upon 2. Okay. Did you get this? Yes, sir. Now you can solve this power 2 to the power 1 plus N minus 1 by 2. ये 1 add हो जाएगा N minus 1 by 2 के साथ. When you will solve this, you will find out that this is 2 to the power N plus 1 upon 2. You can also write 128 in the power source. So it's like To the power 7. yeah, 2 raised to 7. Now you can easily compare N plus. Sir, about this 2 raised to 1, can't we like take it to the right hand side and make it like 16? Yeah, bilkul. You can easily. Then Okay, 1 by 2 will be equal to 6. ये ले ऐसे कर लेते हैं. 2 raised to 6. तब भी आंसर वही आएगा जो पहले आने वाला. Okay, sir. Sir, I have one more doubt. Yeah. These 11th question, sir, can you just explain it? Yeah. You won't be able to solve 11th for now. Actually, this is a question for series.
So first I'll explain sigma. What is sigma? How to implement sigma? Then we'll solve this question again. This is an easy question, but you just don't know what is sigma. Yeah, Tariq. Sir, can you explain that ninth question? Yes. I'll explain every question. You just Okay. solve these questions. You just ask me anything. No, Even sir, that ninth one I'm getting little doubts. Like, can you just explain it? Yeah, It's yeah, not I right will. to. It's not able to get. Yeah, I will. Just wait. Yeah, Safa, you were saying something? so for the 12th one, can you just like tell the beginning part of it, like the three for some of the first three terms of a GP? In this, would we take the three terms as a comma ar square? But their product is also given. No? The product is one. Yeah, that's the thing, sir. I can't understand the beginning But of how do I see, can. but yeah, that they can give you, and like they can give you anything. But you have to remember this, that if the product is given in GP and if the sum is given in AP, then you must assume the terms, then you must select the terms as you have been described. Okay. So if product of the terms is given and the sequence is GP, तो कुछ सोचने का ही नहीं है सफा. A upon R, A और AR वही एज्यूम करना चाहिए हमें टर्म्स, वो बेस्ट सॉल्यूशन देगा. मैं ये नहीं कह रहा कि A, AR और AR स्क्वायर से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उससे भी आएगा आंसर. पर शॉर्टेस्ट वे टू गो टू रीच टू द आंसर विल बी कि अगर तुम A upon R, A और AR लेते हो तो. ठीक है. तो अगर तुझे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं. You can start solving this. If you're not able to solve, so tell me. I'm first solving question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब ये जीपी दिया हुआ है. चलो ये इंटरेस्टिंग जीपी है. गुड. और हमें इसके सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है. दिस इज अ जीपी. हमें इसमें एस एन फाइंड आउट करना है. राइट. तो सबसे पहले तो ए बताओ मुझे. थरीफ ए क्या है यहाँ पे? Sir, one. 1. एंड व्हाट इज आर? आर के लिए कैसे निकालेगा आर? अच्छा चल इसमें बता. इसमें आर कैसे निकालेगा? क्या है आर? पहले तो ये बता. व्हाट इज आर इन दिस केस? Sir, is it 2? Yeah. How did you find out it's 2? Sir, because like every number is multiplied with 2. अच्छा. Also you can say this ना कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, या 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो भी 2 आएगा. राइट Tariq? Yeah, yes, sir. So basically how do we find R? We take a term, we divide it by its preceding term, that is R. So take any term, whatever you want to. Obviously you can't take 1 because there is no preceding term to 1. So take any term out of minus a square and minus a cube. Which one do you want to take? Sir, let's take a square. A square. Then it should be divided with minus a to get the common ratio. Correct? Yes, sir. So what should be the common ratio now? If a Sir, square is divided by minus a? minus a. Minus a. Yes. Now think about it. If you multiply minus a with 1, so it will get minus a. Yes, sir. If you again multiply minus a with minus a, this will become a square. Yes, And sir. similarly, if you again multiply with minus a, then it will become minus a cube. So whenever you see, now the important point is this. Whenever you see a GP alternatively positive and with alternative positive and negative terms, you should know कि भाई इसका R तो negative है. Because if R is negative, alternate terms will be positive and negative. One term will be positive, next will be negative, next will be positive, next will be negative, because you are constantly multiplying with a negative number. So the signs of each alternative term would be different. Right? Now you have A, you have R, you have N, you need to find Sn. Okay. So Sn would be A into R to the power N minus 1 divided by R minus 1. First term is 1.
r is minus a to the whole power n minus 1 divided by r is minus a minus 1. So what will it become? नीचे से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, ऊपर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन रिवर्स हो जाएगा divided by a plus 1. This should be your SN. Now this can also be like solved further, but if you are able to reach here, then it's good. Tarif, did you get it? Yes, sir. Okay. Question number 23, Aisha. Yeah, just a minute. Hanji. Sir, there was this one question as well. When we need to prove, I mean, the third one, where we need to prove that Q square is equal to PS. So, sir, do we just directly like take the values of it? Like Q is 8 term, which is AR raised to 7. So we can the whole square. Can we like directly do it? Or is there? Just define P, Q, and S. P Okay. will be A into R ki power 4, Q will be Yeah. A into R ki power 7, and S will be A R. into R ki power 10. Yeah. And Yeah, so yeah. we can just multiply and show it how. Yeah, yeah. Okay, sir. So in 23rd, if the first and nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product of n terms, prove that P square is equals to AB to the whole power n. Aisha, this is a good question, first of all. And second, okay, we can बहुत easily prove it. Like, ekdam. Guys, sorry. Has everybody noted down? Yes, sir. Okay. Cool. So 23 को हमने कल एक बात करी थी कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इन एन एपी इज ऑलवेज इक्वल. और किसके इक्वल होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होता है हमेशा, अगर आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम निकालते हो तो. एपी के केस में याद है ये बात आयशा? ये प्रॉपर्टी हमने एपी में लिखी थी. ऐसे ही कल हमने एक प्रॉपर्टी लिखी जीपी में, याद है वो क्या थी? The first term, the product of the first term and the last term is equal to the product of the second term and the second last term. And similarly, equidistant terms का product same रहेगा. Yeah. Right? तो हमने कल ये प्रॉपर्टी लिखी एक एपी के जीपी के अंदर कि a1 इंटू ए एन की जो वैल्यू होगी वही होगी a2 इंटू ए एन माइनस 1 की, वही होगी a3 इंटू ए एन माइनस 2 की. इन फैक्ट वही होगी किसी भी जनरल टर्म के लिए विच कैन बी रिटन एज. तुम इस पे ध्यान मत देना कि ये आपने कैसे बनाया है, ये छोड़ो, ये आप समझो बात मेन के कैसे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. तो जनरल टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी ए के इंटू ए ऑफ एन माइनस के माइनस 1. राइट नाउ इसका मतलब बस कहने का ये है कि अगर आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स लेते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा. अब इस प्रॉपर्टी से एक तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं सॉल्व, बिल्कुल डायरेक्ट. कैसे? तो मुझे ये बताया गया कि आपको प्रूव करना है P जो है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है. तो अगर ये n टर्म्स हैं तो क्या मैं इनको n/2 पेयर्स में ब्रेक कर सकता हूं? अब देखो मैं ये कह रहा हूं a1 इंटू ए एन का जो प्रोडक्ट है वही तो a2 इंटू ए एन माइनस 1 का भी है, वही तो a3 इंटू ए एन माइनस 2 का भी है. तो मैंने इन बेसिकली n वैल्यूज को दो दो के पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करा तो टोटल मेरे पास n/2 पेयर्स होने चाहिए, क्योंकि टोटल n टर्म्स है तो टोटल n/2 पेयर्स होंगे. और हर पेयर का प्रोडक्ट a1 इंटू ए एन के बराबर ही आएगा. तो क्यों ना मैं इस पूरे को ऐसे लिख दूं a1 इंटू ए एन
एक पेयर, और ऐसे ही कितने पेयर, n/2, तो a1 into an to the whole power n/2. Now if you take square from both sides, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यही प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो बस ये दिया हुआ है a1 a है, an b है, तो ab की होल पावर n बन जाएगा। बट आयशा ऑब्वियसली हम वहां पे नहीं कर पाएंगे यार, सीबीएसई में। सीबीएसई के लिए हमारे पास इसका पूरा तरीका है, बट ये तो पहले अपने दिमाग को समझा ले कि ये क्या करा है हमने। ये हमने बहुत सिंपल इसके पेयर्स बनाए, पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, सिंपल सिंपल बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर लेट्स से अभी मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता सीबीएसई के लिए, तो वो क्या चाहते हैं हमसे? कुछ नहीं, बस वो चाहते हैं कि भैया ये सब आप करो, ये टर्म्स को आप लिखते जाओ। कैसे लिखते जाओ भाई? देखो चलो आओ इसे भी समझाते हैं। हाँ, मैं इसको हटा दूं? कोई लिख रहा है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर मैं जो काम की चीज होगी वो रख लूंगा, वो सब हटा दूंगा। ओके, इन दैट केस चलिए जी, हमें बताया गया है ये कोई जीपी है। जीपी में पी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स है, तो हमने कहा भैया पी को ऐसे लिख दो फिर। A1 नहीं लिखते हैं, आर भी दिए हुए इसमें, अच्छा लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। A1 A है और AN की वैल्यू B है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमें पता है कि इसका प्रोडक्ट ये होगा। अब चलिए A1 लिखते हैं, A1 की वैल्यू तो A है, लेट्स से दिस जीपी का कॉमन रेशियो है R, तो A2 की वैल्यू क्या होगी आयशा? मतलब सेकंड टर्म कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म है A, कॉमन रेशियो है R, व्हाट शुड बी द सेकंड टर्म? AR. What should be the third term? AR square. Correct. What should be the nth term? AR is to n minus 1. Correct. ठीक है जी, अभी मेरे को ये भी पता है कि an मुझे b दिया हुआ है, यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं a इंटू आर की पावर n-1 b है। ठीक है, ये काम आएगा मेरे अभी। चलिए जी, अभी मैंने ये लिख लिया ऐसे। अब जरा ध्यान दो, a कितनी बार आया होगा? एक बार A1 में आया, एक बार A2 में आया, ऐसी एक बार A3 में आया, एक बार AN में आया, हर बार एक एक A है, यानी कि कितने A हो चुके हैं आयशा, बता सकती है बस? एक A, 2A, 3A, कितने A होंगे टोटल? यहाँ पे A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ मेनी A's आर मल्टीप्लाइंग इन दिस? देखना पता है n टाइम्स, तो क्या होना चाहिए? क्या मैं इसे a टू द पावर n नहीं लिख सकता? a गेट्स मल्टीप्लाइड n टाइम्स। बोल, क्या मैं r की पावर्स, अब r को देखते हैं, चला जा। एक तो था a, एक सारे को मैंने कंबाइन कर लिया, तो ये a की पावर n बन गया। अभी r पे आते हैं, तो ये है r की पावर 1, r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर 4 अप टू r की पावर n-1। थोड़ी देर के लिए पहले ये सॉल्व करके बता चल मुझे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्या बनेगा भाई ये? 2:6. कैसे बना? We added the powers. We added the powers, तो क्या मुझे यहाँ पे भी ऐसे नहीं लिख देना चाहिए? Yes. अब इसका सम देख लेते हैं। अरे यार, मैंने एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें बताना छोटा सा भूल गया, मतलब भूल के गया, है 10th का फॉर्मूला है वैसे तो। हाउ टू फाइंड सम ऑफ, बताएंगे हम ये आगे वैसे तो आपको दोबारा, बट फॉर नाउ लेट्स से these are n natural numbers, right? तो हाउ टू फाइंड सम ऑफ n natural numbers? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता है? 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो आपको। Sorry, sir, you're asking to find the formula for? Sum of n, these first n natural numbers.
by 2 the whole into plus n into n plus 1 by 2. This is the formula. We have studied this in the 10th class as well. You can find this out using AP. This is a very simple sum. Nothing to worry about this. But you should remember this directly. So let's say I ask you 1 plus 2 plus 3 up to 13. क्या sum है इसका? तो you can directly solve it. कि भाई इसका sum होगा 13 जहां 1 से शुरू होना चाहिए natural number. So if you are finding out the sum of natural numbers and that series gets started with 1, तो जहां तक वो जाएगा, let's say this is going up to 13. So 13 into the next number divided by 2. So let's say if I want to find out the sum up to 50 natural numbers, what should be the sum? Aisha, apply this formula. 51 by 2. Correct. चल वापस आ जाओ. अब यहां पे मैं सम निकाल रहा हूं. कितने नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहा हूं? 1 2 3 अप टू, हाँ जी, कहां तक निकाल रहे हैं सम? अप टू n minus 1. तो व्हाट शुड बी द सम? n minus 1 into हाँ करेक्ट है, बोल आगे बढ़. n minus 1 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? n आएगा into divided by 2. समझ आई ये बात? yes. ठीक है, अब आते हैं, चलो बात पे. अभी हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, अभी देख एक और काम कर सकता हूं मैं, ये तो छोटी सी बात है. इस n को पावर को पूरे के साथ लिख रहा हूं, तो r की पावर बच जाएगी n minus 1 by 2 और a की कोई पावर नहीं बचेगी, होल पावर n चला जाएगा. ठीक है, अभी देखते हैं. p ये बना बेसिकली हमारा. अभी मैं p स्क्वायर करता हूं, तो यहां पे भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा. 2 को अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर n minus 1. नीचे से 2 चला जाएगा, और होल पावर में अभी भी n ही रहेगा. एम आई करेक्ट? ये स्टेप समझ आया आयशा? Yes. ठीक है, तो इसी p स्क्वायर को, a स्क्वायर को लिख दे a इंटू a r की पावर n minus 1 to the whole power n. This is nothing but b. Hence proved के मार्क्स होते हैं, ये मत भूलिए. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 है hence proved के, 1 है इस पूरे जो भी तुम लिखोगे बारे में. Aisha, did you get it? Yes, sir. So we can solve it like this. और वैसे तो हम इसको बहुत छोटा वहां से भी कर ही सकते थे जो हम बात कर रहे थे. Safa, were you able to solve this question number 12? question number 12, sir. हाँ, अरे you were saying ना कि question number 12. I was doing the first one, but sir, I have other doubts as well. हाँ, Question. yeah, ask me. Whatever doubts you have. So for the 17th one, to prove that they are in a GP, we have to prove that the common ratio is the same, right? Yes. So sir, they have given the 4th term, 10th and 16th term. So for this, sir, we have to first find the first term, second term, third, and prove. No. So you assume that GP with first term as A and common ratio as R, right? Yeah. So what should be the value of X in terms of A and R? This is A raised to R, sorry, A into R raised to 3. Yeah, A into R cube, right? Yeah. What's the value of Y? A raised to
A into 9, sorry, R raised to 9. So yeah. And what is Z? A into R raised to 15. Now, these are three terms. You have to prove that these three terms are in GP. How can you Sir, prove that? that the common ratio is equal. for this. Yes. I Or, thought the common. no, there was one other way. If you prove y square is equals to xz, then it simply means that x, y, and z are Hello? in G. Yeah. I'm Safa, can you sorry. hear me? Yeah, sir, can you just repeat what you said? Yeah. So I was telling that if you want to prove that x, y, and z are in GP, you just simply need to prove that y square is equals to x into z. Okay, sir. Yeah. So you can go either way. And sir, for the 18th question, it has Hmm. given us the sequence. Hmm. At first, You will I not be didn't. able to find out this sum Yeah, I'm not able to. Like because the R. this is not AP, neither AP nor GP. For now, this is nothing. Sorry. But we can change it. We can change it to a GP. This is not a GP right now. Yeah. But we can change it to a GP. We can transform it to a GP. So that I'll teach in today's class. Okay, sir. Yeah. Ask me. I mean, you can ask me any question. I'll tell you whether you should be able to do it or not, or whether we'll be teaching it or not, whether we'll be studying it or not. Okay, sir. अच्छा जी, एक सेकेंड. 30th. ओके. हाँ, तो ये बस तुझसे ये पूछना चाहता है टर्म्स. ठीक है. तो एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 30. अभी चलो क्वेश्चन नंबर 30 अब तुमसे सॉल्व कराते हैं. अभी तुमने काफी चीजें पढ़ ली हैं. फहद कुछ बोल रहे? बोल. चल तो फिर बोल. नहीं, अब मैं कह रहा हूं बोल. 30th क्वेश्चन सॉल्व कर. चल आजा. The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Okay, so this is a puzzle as well. Can I remove this? Yes, sir. Oh. So this is a puzzle as well. This puzzle is asked by many companies during their placement sessions and all. So what's the puzzle? That there is a place. It can be. I mean, it can be explained in any way. But let's take the bacteria example only. So there's a culture in which bacteria doubles every hour. So basically, there is a jar. You can take it like that. In this jar, what is happening is whatever bacteria is present right now, after 1 hour, they will double their quantity. That is, after 1 hour, let's say this is some 7 p.m. So if you come out at 8 p.m., the quantity will be 2x. If you come out at 9 p.m., the quantity should be how much? Twice of it. Double of 4x. Yes. So first of all, there is a puzzle for all of you. Okay. Let's say this jar gets filled in 16 hours. However, the quantity of this jar was, however the volume of this jar gets filled with bacteria in 16 hours. Okay. हमने कुछ bacteria से start किया. Maz, you can understand Hindi, right? Maz, are you in the Yes, class? sir. Yeah, you can. Can you understand Hindi? Yes, sir. Okay, cool. Yes. So, sir. yeah. So this jar gets filled in 16 hours. Okay. So you have started with some quantity of bacteria. I don't know how much. Neither I do need to know, right? That is the question. That is the puzzle, right? तो हमें ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि कितने बैक्टीरिया से हमने स्टार्ट किया. बट हमने कुछ बैक्टीरिया से स्टार्ट किया and this jar gets filled in 16 hours. Now the question is, in how much time, दो क्वेश्चन है. The jar will be 25% of its original capacity,
and 50% of its original capacity. जितने भी पूरी कैपेसिटी है उसका 50% कितने टाइम में फिल हो गया होगा? पूरा 16 घंटे में फिल होता है, तो उसका 50% कितनी देर में फिल हुआ होगा? एंड अनदर क्वेश्चन इज 25% of the jar will be filled in how much time? You guys only have 1 minute. और पेन उठाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, मतलब you don't need to use your pen. Sir, can you repeat the question? या क्वेश्चन वाज, आयशा ये जार फिल हो जाता है 16 घंटे में, हमने बैक्टीरिया कुछ दिए इसको, हर घंटे बाद बैक्टीरिया डबल होते जा रहे हैं, ये जार पूरा का पूरा 16 घंटे में फिल हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज ये जार कितनी देर में 50% फिल होगा? अगर पूरा जार 16 घंटे में फिल होता है तो हाफ जार 50% ऑफ जार कितना टाइम में फिल होगा? एंड अनदर क्वेश्चन वाज 25% जार कितनी देर में फिल होगा? So first incorrect answer was Safa. Yes, please. So you were saying in how much percent? 50% means half of the jar. 8 hours. It would be. 8 hours, yeah, Safa. यही सबसे कॉमन आंसर होता है, पर बिल्कुल गलत है. कोई नहीं, बट ट्राई इट. Yeah, please feel free to put your answers. Sir, हाँ करिए. sir, I may be wrong, but is it 12 hours? 12 hours for 25% or 50%? 50. 50. I'll ask you, how did you reach to 12 hours? Can you explain? Like, do you... No, sir, because I thought like if the jar like like if it increases like by 24 hours, then it may be 12, like that. I thought. I think 16 hours. No. The timing was 16 hours for the full jar. Okay. 16 hours for the full jar. Yeah. Okay, fair enough. Technical. In that case, the answer should be 8, right? Which is incorrect. Sir, 8. But which is incorrect? It has already been answered by Safa that it should be 8 hours. चलो, time over. Okay. भाई क्या कर रहा है ये जार? डबल हो रहा है ना हर बार. तो जब ये 16 घंटे में पूरा फिल हुआ होगा, लेट्स टॉक अबाउट द 15th आवर. ओके, 15th आवर में जितना जार के अंदर बैक्टीरिया होगा, 16th आवर में उसका डबल हो जाएगा. Am I correct? आप कह रहे हो 16 आवर्स में जार फुल हो गया, तो 15 आवर में जार हाफ रहा होगा ना, तभी तो 16th आवर में फुल हुआ. But in the 15th hour, it's half. या तभी तो 16th में फुल हो गया वो, क्योंकि हर बार डबल होता है ना सफा. Okay, yeah. हर बार डबल हो रहा है, तो 15 आवर्स में वो हाफ फिल हुआ होगा, 16th आवर में वो और हाफ फिल हो गया. तो 15th आवर पे क्या हुआ होगा सिचुएशन? 15th आवर पे कोई इतना फिल हो चुका होगा. अब 16th वाले पे क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, यानी कि पूरा फिल हो जाएगा. आयशा, ये बात समझ आई क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. तो 15 आवर्स में हाफ फिल हुआ होगा, तभी तो 16th में पूरा फिल होगा. चलो अभी आंसर करोगे, 25% कितनी देर में फिल हुआ होगा? 14 hours. 14 hours. 14 hours. यस, करेक्ट. तो ये आयशा, ये वही पजल का छोटा सा पार्ट है. बस बड़ी पजल ये है जो मैंने तेरे को बताया अभी.
और ये तुमसे कभी ना कभी आगे जब तुम कॉलेज में होगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज व्हेन यू सिट फॉर प्लेसमेंट्स तो or when you sit for interviews, so they will ask you puzzles if you are appearing for data science or computer science, all these things. So they will surely ask you many puzzles. One of the puzzle is this. Okay. Now in 30th question, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Okay. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour, nth hour? ठीक है भाई, पहले में 30 था, दूसरे आर में कितना हुआ? 60, 120, 240, बढ़ता चला जाएगा। तो एक जीपी बना रहा है ये। अब बता तेरे को क्या चाहिए? वो कह रहा है A2 दे दो, यानी कि सेकंड टर्म दे दो। तूने कहा AR होगी 60 होगी, उसने कहा A4 दे दो, तुमने कहा भाई ये तो ये होना चाहिए which is nothing but this। ऐसे आंसर आता चला जाएगा। ये आंसर्स हैं तेरे क्वेश्चन के। uh, 124 आफ्टर द एंड पूछा है ना? अच्छा, ओरिजिनली ये था ना? हाँ ठीक है। तो फर्स्ट आर के बाद, हाँ यार सही 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 सफा, यू आर करेक्ट। सेकंड आर के बाद पूछा तो हाँ 120, 480 ये होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड आर अगर वो कह रहा है तो A3 निकालना पड़ेगा मुझे। यस, मतलब A3 का मतलब है 2 घंटे के बाद क्या होगा। यही तो ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल है ना। आफ्टर 1 आवर तो ये हुआ होगा, आफ्टर 2 आवर्स ये होगा। ये तो हमारे पास थे ही, 1 घंटे बाद इतने हो गए, 2 घंटे बाद इतने हो गए। तो और यू कैन स्टार्ट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ this A1 should be, मतलब you can also start with 60, take A60 फर्स्ट आर के बाद जो बना वो फर्स्ट टर्म है, तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इन दैट केस यू विल गेट दिस 120, दिस गेट 480 एंड दिस यू विल गेट 60 into 2 to the power n-1। हाँ आयशा, ये समझ आया तेरे को बात? Yes, sir. हाँ जी, एनीथिंग एल्स? ओके, क्या बात है, आज तो सारे क्वेश्चंस करके आए हैं। फीडबैक भी पहुंचाया मैंने अभी तुम्हारा, है ना? उस फीडबैक को भी पढ़ना ध्यान से जरा। सब लोगों के लिए लिखा है, टाइम दिया है मैंने उसे लिखने में ना, काफी इंपॉर्टेंट टाइम होता है मेरा। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ तुम्हारी तरह, एंड तो उस टाइम को हटा के मैंने तुम्हारे लिए टाइम दिया है फीडबैक लिखने के लिए, तो जस्ट रीड दैट। ओके, ठीक है जी, रुकिए अब जरा। गुड, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीपी। तो कल हमने जीपी के बारे में तो ठीक ठाक सारा पढ़ लिया था। आज
आज कुछ क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको और क्लैरिटी मिलेगी. But the last topic of GP is GM, geometric mean. Just like arithmetic mean, there is a concept of geometric mean as well. So first of all, let's understand what geometric mean is. Then we will come to geometric means. So what is a geometric mean? Geometric mean is denoted by G, and this is just like in that case we find out sum of all the observations. So it should be product of all the observations, because sum gets replaced with product in GP. और प्रोडक्ट के साथ आएगा फिर पावर 1 upon number of observations. That's the basic formula for geometric mean. Product of all the observations divided to the power 1 upon number of observations. So let's say you want to find out geometric mean for two numbers, A and B. So what is their geometric mean is their product, which is A into B to the power 1 upon total number of observations, which are 2. So root AB is the geometric mean of two numbers A and B. Let's say you want to find out for three numbers. And these numbers are some A, B, and C. Yes, Tharif, how would we find this GM? Just apply the formula for three numbers. Aisha, will you try this? What should be the GM of these three numbers, A, B, and C? ABC. Yes. Whole raised to 1 by 3. Correct. Which is equal to cube root of ABC. Very good. Right. This can be obviously expanded to n numbers. Let's say these n numbers are x1, x2 up to xn. These are n numbers. So what will be their GM? Their GM will be their product of all the n observations, that is x1 into x2 into x3 up to xn to the whole power 1 by n. So that is the formula for geometric mean. जैसे आप वहां पे निकालते थे अर्थमेटिक मीन के केस में, sum of all the observations divided by number of observations. Similarly, in the case of geometric mean, you will be doing this product of all the observations to the power 1 upon number of observations. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ज्योमेट्रिक मीन का. Now let's come to the next thing. Insertion of n GMs, geometric means. You write this full, geometric means. Don't use this shortcut, GMs. Write as geometric means. So just like you have introduced n arithmetic means between two numbers, we have to introduce now n geometric means between these two numbers. What was the concept in AMs, arithmetic means? अगर हमें n arithmetic means introduce करने होते थे, तो हम कहते थे कि भाई A और लेट्स से इनके बीच में n arithmetic means है, A1, A2 up to AN, B. तो ये arithmetic means तब बोले जाएंगे if this sequence is in AP. Am I correct? Do you remember this? Yes, Safa, please. I didn't understand this insertion of. Can you just repeat what you said? Yeah, I said that when we talked about AMs, arithmetic means in AP, so we talked about this, that let's say we have to introduce n arithmetic means between these two numbers A and B. So how can we introduce them is these numbers are A and B. Let's say these arithmetic means are capital A1, capital A2 up to capital AN. So ये arithmetic means we will only call these numbers as arithmetic means if
A, A1, A2 up to AN, comma B, this sequence forms an AP. Then only these capital A1, capital A2 up to capital AN will be called as AMs, right? Okay. Yeah. The similar concept applies in GMs as well. So let's say you have to introduce n geometric means between these two numbers A and B. So what you can do is, you can safely say that let's say these n geometric means are denoted as G1, G2 up to Gn. Now, if these are n geometric means, then this should form a GP. Just like arithmetic means, the geometric means are also the similar concept. Arithmetic means was in AP, geometric means is in GP. So obviously this sequence has to be GP in this case. Now what do you need? You need R, common ratio. Yes, Aisha. Sir, what is arithmetic mean? What is arithmetic mean? Yeah, AMs. Arithmetic mean तो हमें पता ही है, sum of all the observation divided by number of observation. पर arithmetic means की अगर हम बात करते हैं, तो arithmetic means में हमारे पास यही होता था कि arithmetic means में हम कुछ numbers को दो नंबर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं. हमें बोला जाएगा find five AMs, find five arithmetic means between 3 and 27. तो इसका ये मतलब है कि 3 और 27 के बीच में 5 नंबर आप इंट्रोड्यूस करो, जिसको आप कुछ भी मान सकते हो. हम जनरली उनको A1, A2, A3, A4, A5 मान लेते हैं. आप उन 5 नंबर को 3 और 27 के बीच में इंट्रोड्यूस करो, पर वो 5 नंबर इन दो नंबर्स के साथ मिलके 3 और 21 के साथ, 3 और 27 के साथ मिलके एक AP बनाए. तो आप ये बोल सकते हो कि ये 5 नंबर अर्थमेटिक मीन्स है इन दो नंबर के बीच में. दिस वाज अर्थमेटिक मीन्स. सिमिलरली अगर आपसे बोला गया है कि आप 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करो दो नंबर के बीच में, तो आप बोलोगे कि ठीक है, इन दो नंबर्स के साथ इनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन आएंगे वो जीपी बना रहे हैं. दैट्स द कॉन्सेप्ट. सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस. द कॉन्सेप्ट इज दिस, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये याद है तो फिर आपको ये बनाने की कुछ जरूरत नहीं है. फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला बहुत बढ़िया बात है. ना भी हो तो भी चलेगा यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही तो फॉर्मूला भी बन रहा है ना. सो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस दीज एन जीएम्स. वी नो ए, वी नो बी, वी नो एन. व्हाट वी डोंट नो इज आर, कॉमन रेशियो. आर निकालने के लिए क्या करें? देयर आर टोटल एन प्लस 2 टर्म्स. एन तो हो गई ये जीएम्स 1 2 3 4 अप टू n, और दो टर्म हो गई ये. देयर आर टोटल n प्लस 2 टर्म्स, जिसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म b है. सो लास्ट टर्म इज n प्लस 2th टर्म, अगर टोटल इतनी टर्म्स है तो. नाउ व्हाट इज द लास्ट टर्म? दिस इज b. हाउ कैन यू राइट दिस n प्लस 2th टर्म? a into r की पावर n plus 1. How can you find r? You know a, you know n, you will know b. You will know all three things. So the r to the power n plus 1 would be b by a. a को मैं उधर ले गया. Now to find out r, take 1 upon n plus 1 power on both sides. अगर आप 1 upon n plus 1 पावर दोनों साइड लेते हो तो देखो यहाँ का n plus 1 कैंसल आउट हो जाएगा n plus 1 के साथ. So you'll be left with r is equals to b by a to the whole power 1 upon n plus 1. As soon as you find out r, you have g1, g2, g3 up to gn, all the values. How? g1 will be a into r because they are forming a gp. So a into b by a to the whole power 1 by n plus 1 and so on. This is the concept of geometric means. Now let's solve 1, 2 questions on this concept only. Then we will proceed to
other questions. I mean, then I'll also try to solve one or two more questions. Sir, Yes. why are we taking 1 by n plus 1? Because we have to remove this power. R to the power n plus 1 हमें दिया हुआ है b by a है. बट मेरे को तो r निकालने का है. मेरे को r की पावर n plus 1 नहीं निकालना. तो r निकालने के लिए हमने दोनों साइड पावर 1 अपॉन n plus 1 ली. इसलिए ली क्योंकि r की पावर वही है जिससे कि पावर कैंसिल आउट हो जाए. अगर तू ऐसे लेगी पावर तो तुझे पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. पावर मल्टीप्लाई करते यहाँ पे r की पावर 1 बन जाएगा. आयशा, तो लेट्स से तुझे r क्यूब दिया हुआ है कोई वैल्यू और तूने कहा मुझे तो r चाहिए, तो r के लिए क्या करेगी? उधर जाके पावर को रेसिप्रोकल ले ले. 1/3 कर दे पावर का. हाँ जी, ये बात समझ आई? करेक्ट क्वेश्चन. चलो, let's solve this one. 26. तो देखो 26 में उसने आपसे डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे जीएम्स बताओ, बट कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन्स का ही है. वो कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81. आप ऐसे 2 नंबर्स इंसर्ट करो so that the resulting sequence forms a GP. तो क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है 2 GMs इंट्रोड्यूस करो. डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पूरा मेथड से जा सकते हो. कैसे? लास्ट टर्म पता है आपको 81 है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 3 है, आर आपको नहीं पता है, पर आपको ये पता है कि मुझे फोर्थ टर्म लिखने के लिए आर क्यूब लेना पड़ेगा. सो आर क्यूब इज 27 इन दिस केस. So R is 3. Sir, which question is this? 26. Question number 26. We have to insert 2 numbers between 3 and 81 such that the resulting sequence forms a GP. So basically, what we have been asked is to find out 2 GMs between 3 and 81. They didn't use the direct language कि ज्योमेट्रिक मीन्स बताओ. उन्होंने बस थोड़ा सा इसी चीज को इनडायरेक्ट वे में पूछा. सो व्हाट शुड बी GM? G1 should be A into R. In this case, this would be 9. G2 would be A into R square, which would be 27, and this is 81. Now there are few important questions. Let's mark them first. 32. मैं पीछे से आ रहा हूं. Mark them. 9.3 क्वेश्चन नंबर. चलो शुरुआत से शुरू करते हैं. 18. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नहीं करने हैं, क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट. ये ढंग से समझ लेना. अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मतलब मुझसे समझ लेना, बोल देना, मैं सब समझा दूंगा, बट छोड़ के मत जाना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है. वैसे तो 22, 23, 24 के बाद ये सारे इंपॉर्टेंट है. 25 भी इंपॉर्टेंट है, 27 भी इंपॉर्टेंट है. Which question are you? 9.3. I'm talking about 9.3 exercise, and these are important questions, Safa. So you should know how to solve them. Yeah, so this is a different question or like you're giving it? No. I'm not giving anything. I'm just telling you the important questions. You have to solve the full exercise, obviously. Oh, sorry. Yeah. Yeah. But these are important questions which may come in your exams. Like, they will have higher probability as compared to others.
So questions after 22, all the questions are important. I mean, after 21. So ask me doubts in the next class. Now I'll tell you how to solve question number 18. Yes. So we have to find the sum of n terms of this sequence. Now इसी टाइप के बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं जहां पे क्या होगा, digits will be repeating. This can also come in points, 0.8, 0.88, 0.888, 0.88888, similar. Now how to find Sn? So to find Sn, just think about this. What will be Sn? First term is 8 one time, second term is 8 two times, third term is 8 three times. So what should be the nth term? Can someone tell me? Acha, what is the fourth term of this series? Fourth term. 8, 8, 8, 8, 4 times. So what should be the fifth term, Safa? 88,880. 88. So you can simply say that 8 is coming 5 times, right? Like 5 times 8. Yeah. Like that. So what should be the nth term, Safa? 8 into 10 times. Yes. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, up to n times 8. Right. Now, let's solve this. Can we take 8 common? क्या बचेगा हमारे पास? 1. We'll be left with 1 plus 11 plus 1, 1, 1, right? Plus, similarly, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 up to n times. Guys, am I correct? Yes, sir. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है इनफैक्ट तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि जरूरी कि यही इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा. जस्ट गिव मी 1 minute गाइस. यस. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपके पास डिजिट्स हमेशा रिपीट होकर ही आ रही होंगी. बनेगा ऐसे ही, जो भी होगा बनेगा कुछ ऐसे ही. डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी. हो सकता है पॉइंट लगा के दे दे, बिना पॉइंट के दे, कुछ भी दे, बट बनेगा कुछ ना कुछ यही. डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट डिजिट कॉमन. Then multiply and divide the whole series by 9. This is standard procedure. So you have to divide by 9 and then multiply by 9. So जो multiplication वाला 9 होगा, take that inside. इसके साथ होगा 9 आ जाएगा, इसके साथ होगा 99 आ जाएगा, इसके साथ होगा 999 आ जाएगा. Similarly, इसके साथ होगा So why not? why 9? Yes, that's a good question. But you will get that answer here. So can I write 9 as 10 minus 1? Can I write 99 as 10 square minus 1? Can I write 999 as 10 cube minus 1? हाँ जी, यहां तक बात सही है क्या? तारीफ समझ आ रही है ये बात? Yes, sir. ओके, माज? जी सर. ठीक है. तो अगर समझ आई तुम लोगों को बात दोनों को, तो तुम दोनों मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी दिस वैल्यू 99999 अप टू 9 n टाइम्स. आप यहां से रेफरेंसेस ले सकते हैं एंड टेल मी व्हाट शुड बी दिस वैल्यू. भाई 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूं, और 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूं. तो 99 is basically 10 to the power 2 minus 1. 999 is basically 10 to the power 3 minus 1. 1000 minus 1.
So what should be this value? How can this be written in 10 की power -1 form? Fahad. Sir, is it 10 to the 10 power to n minus. yeah, Yeah, correct. तारीफ यही बोलना चाह रहा था. Sir, 10 and -1. Yes. ये आप यहां से इसका एनालॉजी निकाल सकते हो कि एक बार 9 आया तो 10 की पावर 1 था, दो बार 9 आया 10 स्क्वायर -1 था, तीन बार आया तो 10 क्यूब -1 है. इसी तरीके से अगर n टाइम्स होगा तो 10 की पावर n -1 होगा. सफा समझ आया तेरे को ये क्यों करा था हमने? Yes, sir. Why? Tell me. Yes, Why now, did we do this? I don't know exactly the reason, but then 10 minus 1, all of this would be easier to. Why? Why it would be easier? Because this is looking good. Just for the sake of looking good? No, like to find R and then to find Sn. So how would we find Sn now? Tell me. For this GP. Yes. So we multiplied and divided by 9 so that we can convert it into a GP. Now the first GP is 10 plus 10 square plus 10 cube up to 10 to the power n. और दूसरा है -1 -1 -1 -1. कितनी बार है यार ये -1? कितनी बार ऐड कर रहा हूं मैं -1 को? Safa, I can't hear you. N times, right, sir? N times, yes. So if I add, कल भी हम ये बात कर रहे थे, if I add 2 3 times, so how can I write it directly? Sorry, sir. 2 cube. If I, yeah, not 2 cube, Aisha, 2 into 3. So if, yeah, Safa, what I'm saying is that if I add 2 3 times, so I can write it directly as 2 into 3. Yeah. That way, if I'm adding -1 n times, so I can write it -1 into n. So minus N can it be? Minus n, yes, it would be minus n. And this can be found out by using GP. So the answer would be Sn is equals to, I'm writing this directly now, 8 by 9, this would be 10 into 10 to the power n minus 1 divided by 10 minus 1, which will be 9 minus n. So this is 8 by 81, 10 to the power n plus 1. You have to simplify this to get to this, what I'm doing right now. Just take the LCM. You will be left with this. This is Sn. Now, what happens if there was 7 plus 77 plus 777 plus 7777? तब क्या करता मैं? You take 7 as common. Yes. And And then repeat the same procedure. repeat the same. Yeah. So can you directly tell me, Safa, if here it would have been 7 plus 77, what should be the answer here? Here. 7 by 81 the whole into 10 raised to n plus 1 minus minus 9 and minus 10. No, minus 7. Sorry. No, minus 7, minus 10. minus 10. Everything is same, just you have to take Yeah, 7. 8 will be replaced by 7. Yeah. Correct. So there will be a lot of questions based on this. You can be asked any other, you should be asked, I think your school should ask you another question from this. And that we will be able to. Yeah, Aisha, please. Sorry, can you explain second last step from second last step? अच्छा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कैसे आए? Yes, no. After यहाँ से यहाँ पे GP. कैसे आए? Yes. या ठीक है, तो ये एक जीपी है, n टर्म्स है इस जीपी की. फर्स्ट टर्म इज 10, r इज 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n. तो a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1.
फॉर्मूला अप्लाई करा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का। अप्लाई करेगी तेरे को भी मिल जाएगा ये a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, r था 10 तो r माइनस 1 हो गया 9। लास्ट स्टेप। हाँ लास्ट स्टेप तेरे को खुद करना है, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन कर। 10 को मल्टीप्लाई किया, 9 का एलसीएम लिया 1 के साथ, तो ये बना लिया। बस मुझे तो यही बताना था, मैं तो तुझे यहां तक लेके आना चाहता था। मैंने तो इसके आगे तो बस ऐसे ही बोनस में तेरे को करा दिया, लिखवा दिया। वैसे तो मैं छोड़ देता हूँ, 4 मिनट बचे थे, मैंने कहा मैं कोई नया क्वेश्चन शुरू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि चल कोई नहीं करा देता हूँ। अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन तो मुझे तुझसे ही करानी थी क्लास में। अभी मैं कल 26 के जो बात 22 के जो बाद के क्वेश्चंस हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछ रहा हूँ, ये ध्यान रखना एक बात तो। और आप तो मुझसे जो चाहे वो पूछ ही सकते हैं। पहले हम क्लास में आएंगे, जीपी पढ़ेंगे, जीपी के बारे में जो भी आपके मतलब नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो सब होंगे। जो मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगा इससे ही रिलेटेड, या कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस। आप चाहें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज तक के भी कुछ क्वेश्चंस खत्म करके आ सकते हैं, और जो भी एपीजीपी से रिलेटेड है। अब आपका नेक्स्ट पोर्शन बचता है सीरीज इस चैप्टर में, तो वी विल कंप्लीट सीरीज विद इन द नेक्स्ट वीक ओनली। का नेक्स्ट वीक में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू जो भी चैप्टर मूव ऑन करना है, फिर बाइनोमियल थ्योरम मोस्ट पॉसिबल, बाइनोमियल थ्योरम, देन कोनिक सेक्शंस एंड ऑल, सी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मार्क्स का आने वाला है उससे। बट खैर अभी के लिए तो आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, आपको असाइनमेंट भी मिलेगा इसके अलावा। क्वेश्चंस फटाफट कोशिश करिएगा, मैक्स वेंसडे थर्सडे तक आप पूरा एनसीईआरटी निपटा लें, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे कर पा रहे हो। 9.4 मत उठाना, 9.3 तक पूरा खत्म करो। मिसलिनियस एग्जांपल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन एपी जीपी को बिलोंग करता है उसको सॉल्व करो, और फिर आपको जो असाइनमेंट मिलेगा वो भी सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग गाइस। This is a chapter where you can score well, and this is a chapter which you will be facing in the exams for I think 10 to 12 marks. तो पढ़ लो इसको, और if any one of you is thinking about engineering, then you should read this like in detail, because you will be facing this again. There are a lot of chapters you will be facing in engineering again, because engineering is nothing but maths and physics, और इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पर, वही पढ़ना। चलिए फिर, ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके, सॉरी।